Shri Anil Kumar Jain, Secretary Coal, Shri Bharadwaj ji, Secretary Mines, Shri Pramod Agrawal, Shri M. Nagaraju, Shri V.K. Tiwari, Shri Veera Reddy, other dignitaries and all the stakeholders who have participated in this conclave, first ever conclave and exhibition. The first conclave is happening at the time when the global coal demand is returned back to all-time high in 2022. The global coal consumption is set to rise by 0.7% this year to reach 8 billion tons as per the International Energy Agency. Countries are paying maximum price to secure the coal from remote mines in Tanzania and many other countries. फिर भी Coal India को, in spite of so much of pressure, तो thermal coal का price न बढ़ाने के लिए भी मैं उनको हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ. अदरवाइज अभी जो ये वार वगैरह के कारण जो कुछ भी हो रहा था और ज़्यादा असर होता था. ठीक है, बार बार कहते भी रहते थोड़ा कुछ बढ़ा दो, वो तो बाद में सोचेंगे, लेकिन अभी तक जो क्राइसिस में आप लोगों ने काम किया है, प्रोडक्शन भी बढ़ाया है और उसके साथ ही साथ इंटरनेशनल प्राइस इतने ज़्यादा होने के बावजूद भी आपने सस्टेन किया है. इसके लिए भी दोनों के कारण मैं आपको अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं. जैसे मैंने कहा, the global consumption is set to rise and naturally it will happen in the country also. This itself is an answer to all those who have been saying that the coal belongs to our past. बहुत लोग बोलते हैं कोल का खत्म हो गया. ऐसे नहीं होता है. इसमें सस्टेनेबल कैसे करना, गैसिफिकेशन के बारे में हम बहुत सोच रहे हैं. इंसेंटिव भी दे रहे हैं. अभी 20% था, हमने 50% कर दिया है. और अभी तो हमने ऑलरेडी, you must have seen in the media that प्रोडक्टिविटी लिंक्ड एक स्कीम भी हम कोल गैसिफिकेशन में भी ऑफर किया है. इसमें MOU अभी PSU से हो गया है. प्राइवेट का वेरी शॉर्टली वी आर गोइंग टू कॉल फॉर द बिड. ये सब चल रहा है. बट as I have many a times repeated it, that the coal demand and production is yet to reach peak in the country. This is very my firm belief. Despite what people have been pointing out, coal has a definite future and demand is going to go up throughout further at least 2-3 decades. As per the draft energy policy of the Niti Aayog, the demand of the coal is expected to rise from the range of 1.3 to 1.5 billion tons by 2030. IEA's report also says that coal will be equally consumed as solar energy by 2040. 2040, our total consumption of the electricity is going to be doubled. This is also, it is estimated. जब estimate, अगर ऐसे estimate normally ठीक हुआ है, 2040 का अगर देखते हैं, इसमें 50% पूरा renewable से आता है, तो भी हम कोल से कम 50% उत्पादन करना पड़ेगा. मीन्स आज जो है उससे ज़्यादा हमको 2040 में भी प्रोडक्शन करना पड़ेगा. ये तो हमको सबको मान के चलना है. And as you know, India is the fastest growing economy, and we should feel very happy that people who ruled for more than 200 years who have left behind them, and today India is the 5th largest economy and UK is the 6th largest economy. And the thought process
And the dream of Honorable Prime Minister is that India should lead by 2047. We should be a developed country by 2047. When you go with that dream, then naturally one of the most important requirement will be the power, energy. So keeping that in mind, and also India is the fastest growing economy and the best performing economy post-COVID. कई देशों में हम देख रहे हैं क्या चल रहा है, लेकिन इंडिया is still, we are doing extremely well. And this year IMF has predicted 6.8% growth, and we have to do all possible for the meeting of the rapidly expanding the energy aspiration of the people. Per capita electricity consumption in India is around 1,208 kilowatt, while the world average is 3,260. USA is 12,235 and China is 5,297. इसका कहने का मतलब ये है, हमारा भी कंजम्पशन बढ़ने के लिए there is a lot of scope. And recently we have seen, even after more than 70 years, the villages which were not connected with the power, they have all been completed now. All the villages in India, after Shri Modi took over in 2014, in 1,000 days we completed that. That is going to add, and more than 2.53 crores of the households which were not connected with the power that have been completed. And along with that, we are growing economy. तो हमारा population भी बड़ा है. So our growing economy needs the energy. So keeping that in mind, I would very emphatically tell you, this proves that we can simply not write off the coal anytime soon. तो अभी जो abundant coal mines का जो launching हुआ है second tranche का, आप एकदम आराम से धैर्य से participate करते हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ. You can participate and a revenue share base पे model पे है. And we all know India is the most young country in the world, and if any country can fulfill the need of the world, that is only and only is India in coming days. That you take it from me. और कोई देश दुनिया का जो कुछ भी डिमांड है, from human resource to many things, only India can fulfill this. So we can cater the needs of we should also. So keeping that in mind, we have believed that nation with the world's fourth largest coal reserves should not be sending the foreign exchange to import the coal. मैं बार बार ये रिपीट किया हूँ, जब मैं मंत्री बना 2019 में, कोयला विभाग मुझे दिया गया. प्रधानमंत्री जी ने मुझे, मेरे पास पार्लियामेंट अफेयर भी है आप जानते हो, तो प्रधानमंत्री जी ने मुझे सिर्फ 2 दिन के बाद 30th को मुझे पोर्टफोलियो अलॉट हुआ था, 2 तारीख को प्रधानमंत्री जी ने मुझे बुलाया था. तो प्रधानमंत्री जी ने मुझे पूछा, कोयला और माइन के बारे में कुछ जानते हो? मैंने बोला कभी देखा भी नहीं साहब, आई हैव नेवर सीन इट. तो इतना जानता हूं, कोयला जला के बिजली देते, इतना ही जानता हूं और कुछ नहीं जानता हूं. तो प्रधानमंत्री हंसते हंसते कहा, यही अच्छा है, जो नहीं जानते हैं वो भी थोड़ा कुछ कर सकते हैं, लेकिन एक चीज समझ लो. ही टोल्ड मी वन थिंग, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग. अगर हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट, मैंने बार बार ये कहा हूं, कुछ लोगों को लगेगा रिपीट हो रहा है, लेकिन दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड इट्स ऑलवेज लिंगर्स इन माई ईयर. व्हाट प्राइम मिनिस्टर हैज टोल्ड, ही सेड, इफ वी इंपोर्ट द क्रूड ऑयल, दैट इज admittable, acceptable, but you import the coal, then it is a sin, a पाप है. ये तो मान, इतना ही समझ लो, बाकी सब
अपने आप करेंगे, ऐसे प्रधानमंत्री जी ने मुझे कहा था. And this is what we should understand today. We are the largest producer of the coal and we are the largest importers also. तो इसलिए हमने अभी कमर्शियल कोल भी लॉन्चिंग किया है, अबंडेंट कोल का किया है. And this is why over the period of the last 8 years, we have taken number of reforms to make this sector more competitive. अगर 2004 में 2006 में जब कॉम्पिटिटिव बिडिंग का बात हुआ था, तब भी कॉम्पिटिटिव बिडिंग के साथ ही साथ कमर्शियल कोल मेन हंगा उस टाइम हम लॉन्च करते तो देश का स्थिति आज अलग हो जाता था. इट वुड हैव बीन ऑल टुगेदर डिफरेंट. बट अनफॉर्चुनेटली the political decisions were not taken at that time. But today is the government under the leadership of Prime Minister Shri Modi. We do not hesitate to take any bold decision that I can assure you. That's why I invite you. अभी तो रिफॉर्म हुआ है, तो इसके रिफॉर्म माइन में भी किया है. जब माइन में तो हमने किया रिफॉर्म, बहुत ज्यादा विरोध हुआ था. बहुत ज्यादा विरोध बोलते कम से कम 1 बरस लगा था सभी टेबल पारित होके कैबिनेट तक जाने के लिए. ये लगभग 1 बरस लगा था. तो लेकिन अंत में जब किया, बहुत अच्छा रिजल्ट निकल रहा है, आप सब जानते हो. तो अभी तो the government brought the legislation where the necessary and made the policy changes to boost the transparency in the sector. Coal Mine Special Provision Act was brought around in 2015. Since then we have made time to time changes to act as per the demands of the industry. We are also giving the incentive for the early production. तो पहले फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में हो और कई इसमें हो ले लेते थे, लेकिन प्रोडक्शन नहीं होता था. Now we have given 50% rebate to the mine owner in revenue share paid to the state if they start the early production. Entry norms have been liberalized. No eligibility condition, only upfront payment with the ceiling. No restriction on the sale or utilization of the coal. There is now a revenue sharing mechanism instead of the regime of fixed rupee per ton. ये सब बदलाव जो भी हुआ है, इसके साथ भी मैं आपको कहना चाहता हूं, आपका कोई विन विन सिचुएशन मन में रखते हुए आपका कोई सजेशन है तो I am always available. I will assure you, if you call on my mobile or on my phone, if you tell the reason and disclose your identity properly, even I will personally call you and have a discussion. I want that by 2024, the total substitutable coal import should be stopped from India. This is our goal. This is the Prime Minister has given. To achieve that, I want to learn from him, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस सिर्फ 3 साल का है इसमें. आपका बहुत इसमें जो लोग बैठे हुए हैं, मैं देख रहा हूं इधर से गैलेक्सी ऑफ द पीपल हु आर सिटिंग हियर, वो कोयले में ही पूरा उनका जन्म भी कोयला में हुआ है और शायद रिटायर में और अंत तक इसमें ही रहने वाले हैं. सो पीपल हु स्टडी द प्रॉब्लम by sitting in the AC hall and people who experience the problem, there will be a lot of difference in that. So I want to understand from you. I am open for any suggestion. As a result of our effort, coal sector is scaling unprecedented heights. During 21-22, India's coal sector has achieved the record production of 772 million ton, registering the 8.5% growth, and that is the coal dispatch has been 18.4% to reach 818 million ton during 21-22. और इस बार कोल इंडिया का ही सिर्फ कम से कम 700 मिलियन टन होगा. उससे ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा प्रमोद जी और वीरा रेड्डी जी थोड़ा कंजर्वेटिव होके उनको मन में ये लग रहा है पहले फर्स्ट हाफ में हमने ज्यादा किया है, इसलिए थोड़ा सेकंड हाफ में कम करके, क्योंकि नहीं तो नेक्स्ट ईयर फिर से प्रेशर करेंगे, ऐसे सोच रहे हैं, ऐसे मुझे लग रहा है. तो ऐसे क्योंकि जो मैंने सेकंड हाफ का, अनिल जी आप देखे नहीं देखे, मैं तो गया था WCL. So Mr. Tiwari was there with me. I was just observing. Then my PS was also brought me the figure to show that what is the
Then I said, लास्ट ईयर और दिस ईयर ज्यादा फर्क नहीं है H2 में. तब मुझे लगा कि तो ऑलरेडी इतना किया है तो 700 टारगेट है, अगर 710-20 होता है तो नेक्स्ट ईयर और ज्यादा करते हैं, इसीलिए थोड़ा प्रिकॉशन ले रहे हैं. तो आप इतना चिंता मत करो, बहुत कंपटीशन होने वाला है, प्राइवेट भी आने वाला है, आप बढ़ते जाओ, दिस इज द टाइम. बाद में क्या क्या होगा क्या जानते हैं, कि कोई भी नहीं जानते है, भविष्य कोई भी नहीं जानते हैं. तो इसीलिए मैं, श्रीधर भी बैठे हुए हैं, श्रीधर कम मत करने का सोचो, हाँ तो बढ़ाते जाओ, तो लोग लेने वाले बहुत है. So friends, the 75 coal blocks allocated with a total peak rated capacity of 327 million ton, and a total 42 coal blocks been operational out of these 75 coal blocks. Means whatever the coal blocks after 2015 amendment were allocated or auctioned, their total PRC is 327 million ton, and out of that 47 have started the operation, and we are very closely monitoring that. तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ, PSU हो या प्राइवेट सेक्टर हो, जो ऑपरेशनलाइज नहीं करते हैं हम वापस ले लेंगे. PSU को हम और अनिल जी बैठ के रिसेंटली हमने सबको बुलाया था, आप ऑपरेशनल नहीं कर रहे, आप वापस दे दो. तब ये लोग हमको बोलते थे, सर हम वापस देते तो हमारा बैंक गारंटी आप खा लेंगे. तो मैंने और अनिल जी बैठ के मैंने बोला, अनिल जी आप अभी छोड़ दो, आप ये जो व्यापारी लोग देते हैं ना, ऐसे कोई भी गलत मत मानिए. ये ज्यादा से ज्यादा व्यापार में जो रहते हैं राजस्थानी लोग, तो अग्रवाल जैसे आप मत सोचो, आप जैन जैसे ही सोचो. सोच के बैंक गारंटी का आप छोड़ दो. परफॉर्मेंस गारंटी जो खाते थे हम, इसके कारण वो पकड़ के बैठते थे. मैंने बोला ये छोड़ दो. तो जब हम व्हेन वी डिसाइडेड हम आपके बैंक गारंटी नहीं खाएंगे, आप वापस दे दो. कितना 15 दिया है, 15 वापस दिया है. और नागराजू इज वेरी हैप्पी बिकॉज ही वांट टू ऑक्शन इट नाउ. तो दिस टाइप ऑफ इंटरनल कॉम्पिटिशन शुड हैपन, एंड दोज 15 एंड 1930 crore rupees we have returned. और मैं ये भी कहना चाहता हूं सभी PSU को भी जो बैठे हैं, आज के बाद आप रिजर्वेशन के लिए मत आइए, आप कंपटीशन में चले जाइए. यू शुड कॉम्पीट विद द प्राइवेट, देन योर एफिशिएंसी विल आल्सो इंक्रीज. तो इसीलिए हमने कानून में तो हमने हटाया नहीं प्रावधान, हमारे साथ डिस्क्रिप्शन प्रावधान है अलॉटमेंट करने के, लेकिन हम अलॉटमेंट अभी 2 वर्ष से कम 3 वर्ष से हमने एक भी अलॉटमेंट नहीं किया है. So 4 tranches of commercial auction have been completed and the 5th tranche is under process. उसमें हमने 50% गैसिफिकेशन के लिए रिबेट जो है रिबेट बढ़ा दिया है. From these 4 tranches, 46 coal blocks have been successfully auctioned with the total rate capacity, peak rate capacity of 101 million ton, and the average premium is 38%. ये पहले का है. इस बार का मैंने देख रहा था एवरेज अभी सेट हो गया 7, 8, 9, 10%. कितना हुआ है अनिल जी एवरेज लास्ट ट्रांच का? हाँ 7-8%. मीन्स इट इज स्टेबलाइजिंग. तो पहले बहुत ज्यादा ऊपर जाते थे, अभी स्टेबलाइज हो गया है. हमको सिर्फ यही नहीं है कि सिर्फ रेवेन्यू ही कमाना है, ये मेरा उद्देश्य नहीं है. रेवेन्यू कमाना है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उसके साथ ही साथ जो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन इंप्रूव करके वी वांट इंपोर्ट टू बी रिड्यूस. दिस इज अवर वेरी वेरी थ्रस्ट ऑफ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज दैट. So these auction mines will potentially generate annual revenue of around 13,830 crore and provide approximately 1.36 lakh crores of the employment, 1.36 lakh employment. And ask the government countries to return, I have already mentioned that. And now those 15 blocks, I think Nagaraju will auction in this tranche. Next tranche or this tranche? Next tranche, sir, in October. October, okay. In order further to increase the coal production, captive coal producers have been allowed to sell 50% of their production in the open market after meeting the demand of their end-use plants. In order to incentivize more participation, as I have already told, 50% of gasification, even if you use 10% of your production
in the gasification, 50% rebate is offered now. The sector is also making rapid strides in the clean coal technology and have prepared national mission document for gasification for 100 million ton by 2030. Recently also we had a workshop on this. Therefore, coal sectors look very promising. I invite everyone present here in this conclave to participate in the auction. If you need help with any policy support or any feedback, we are open and I personally welcome that. I am very happy that this conclave has brought together key players of the sector contributing to the growth of mining in India. Happening the first time, National Coal Conclave is sure soon to become an important forum for the mining fraternity. As the day is lined up with the several technical sessions and the session by prominent CEOs, I am confident that we will come up with the insight for the industry to adopt, which is aligned to changing the global demands. Prime Minister Shri Narendra Modi ji has given us a vision, Amrit Kal. India must be a developed nation by 25 years. As we enter the Amrit Kal, we must resolve to fulfill the dreams of India's freedom fighters. It is with the same vision that we are building the new India. By year 2047, we will have fully realized the dreams of our freedom fighters. With this, I urge the stakeholders present today to spread awareness about the achievement of the 8 years in the coal and mining sector and then their impact on their lives. We are making use of the coal reserves to fuel our economy and brighten our lives. मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूँ, हम सब मिलके जो इधर बैठे हुए हैं और थोड़ा कुछ लोग ऑनलाइन में देखते होंगे, if we all put together we decide as a team, then I am very confident. देखो हमने जो किया है वही आप अगर एक बार, if you just have a look behind and see it, the same country. Recently I had been to one of the country which itself calls it as a developed country, and their population is 3-4 crores, and they could not, so far they have not able to complete their vaccination. तो जब मुझे पूछा गया आप उधर कैसा है, मैंने बोला सब अभी आराम से बैठे हैं, हजारों लोग जमे होते हैं, कोई भी मास्क नहीं पहनता है, कुछ नहीं, ऐसे कैसे हुआ? मैंने बोला हमने 200 crores of vaccine, then we had completed 200 crores. I told the ministers there that we have completed 200 crores of the vaccination. Then they were not able to digest and imagine it, 200 crore. तो उनका 3-4 करोड़ का अभी 50-60% भी नहीं हुआ था vaccination. When the country decides, when Indians decide, then it is possible to do this. We have proved in many ways and in many fields in the recent time. So इसमें भी हम आत्मनिर्भर जरूर हो सकते हैं. आप सब लोग, मैं अभी जैसे पहले भी कहा, 3,000 crores, total 6,000 crores is earmarked, 3,000 crores. We are calling bid very shortly for the gasification, and for that there is a viability gap funding incentive, whatever it is called, we are offering that. I call upon you to participate. हम सब मिलके हम कोयला और एनर्जी सेक्टर में हम भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम सब मिलके काम करेंगे, ऐसे प्रार्थना करते हुए, we need your support to fuel the India's growth. Let us strive to become Atmanirbhar Bharat. I wish this conclave a great success, and मंथन होने के बाद मुझे विश्वास है अमृत ही निकलता है. वो अमृत का स्वाद हम सब लोग हमारे कालखंड में ही उसका स्वाद हम आनंद लेंगे, ऐसे कहते हुए बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार. जय हिंद.